All right, guys, good evening. This is going to be our third and last meeting of ACCA SBL March 2019. Okay, and the name of the case study is SMARTWEAR. It's about the retail clothing. In the first meeting, we talked about the question thing. So, we talk about question paper. We discuss the question paper, how's the plan, what are the requirements, and all that. In the second meeting, we discussed the answer, but 50% of the answer. We discussed, I believe, 2 requirements. Okay. Or in today's meeting, which is the third and last meeting, isme we'll be discussing the remaining requirements. Or this is evening time here in Dallas, or my competition is with the sun. मुझे जल्दी से इसको complete करना है before the sun goes down. लेकिन मैंने पहले बैकअप में लाइट ऑन रखी है, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे कि ठीक है लाइट का क्या, मैंने कहा बस ऐसे ही है, सनलाइट के साथ मुझे काम करने में ज्यादा मजा आता है. मॉर्निंग पर्सन. Okay, let me share my screen. Here you go. ACCA SBL March 2019 answer meeting 2. Okay, the requirement we'll be discussing today. Let me go here and see. You must have the question paper. So और मैंने आपको पहले भी ये बात की है कि before you look at this video, the answer video, or even the question video, मैं चाहता हूँ कि पहले you read the question paper, the case study and all that, and you do it in examination conditions. पहले खुद से करें और उसके बाद फिर you watch this. So if you have not done this thing, I want you to stop this video, do it first, and then look at it as a feedback thing. Okay? Achha, let's look here. We'll discuss question number 1, A, B kar liya, 2, A, B kar liya, and now this is question number 3. See, the question number 3. This is I want to do more exam talk. See, zyada humne purely exam talk hi karni hai. Okay, in this question number 3. If you look at this requirement, looks like you're doing ACCA F8, not the P7. ऐसा लगता है F8 की requirement दे दी है. अगर आप March 2019 का पेपर देखें तो वैसे ही this paper looks like a party of different concepts. सही है ना? Easy concept भी दे दी, integrated reporting भी, marketing भी, environmental analysis. I think it covered a lot of topics in the requirement in this in March 2019, but comparatively easy. सही है ना? ज़्यादा मुश्किल नहीं. जैसे requirement 3 है, ये as it is वही requirement है which we normally do in ACCA F8. क्या होता है? You always have the system. जो आप control weaknesses वाला देखते होगे, you always have the system. Either it's a sales system, purchase system, payroll system, whatever. They give you the weaknesses. The weakness already in the cases. और उसके बाद वो आपसे कहता है कि भाई find out the weakness, its impact, and give me the recommendation which you call the control. See, यहाँ पर भी यही बात की है. Let's do it real quick, and we'll talk about the professional marks as well. क्या requirement 3 में the executive summary of an internal audit report which is already provided in the case study में आपको एक appendix दिया हुआ है. SMARTWEAR supply chain management has been given to you by the chair of audit committee. The report identified number of significant issues. Okay, I got it. Okay, they did appraisal and all that. On behalf of the board of directors, the chair of the audit committee has asked you are the consultant, to provide the buying and merchandising director with an objective appraisal of the supply chain management arrangements at SMARTWEAR to effectively. Okay, what is the requirement? Draft a memo to the buying and merchandising director which evaluates the effectiveness of internal control system at the company, particularly on the procurement side, the purchasing side, and recommends control improvement to rectify the identified areas of concern. यानी जो आपको रिपोर्ट दी है उसमें already they have identified the issues. ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि मुझे एक तो आप ये बता दें, draft a memo which evaluates the effectiveness of internal control system at the company, particularly on the procurement side, and their recommendation. यानी आपको और क्या weaknesses नजर आ रही है in that report provided by the audit committee or the internal audit, और आप उसकी फिर हमें recommendation भी दे दें. Very simple. लेकिन देखो और अच्छी बात क्या है? The professional skill marks are available to the commercial equipment. That's simple. That's rational. क्यों? Why do you apply control? सबसे अच्छी बात यही है कि आप control apply क्यों करते हैं? जरा मुझे इस तरफ आने दे so that I can see myself. There you go. Why do you apply controls? देखिए, you apply control because you want to manage the risk. इसका मतलब होता क्या है? This they're saying the commercial acumen, business sense. इसका मतलब ये है कि when you start putting cost, when you start incurring cost of control पे जब आप cost लगाना शुरू करते हैं, obviously controls are not free of cost तो होते नहीं. इसका मतलब when you insert dollars, when you put dollars, the controls go up and the risk goes down. Risk को क्यों down कर रहे हो? Because risk is a condition. In case if this condition arises, your outflow of dollars
will start. सही ना, यही वजह है ना कि रिस्क जहाँ होगा वहाँ डॉलर बाहर जाएंगे। तो आप क्या करते हो, आप डॉलर पहले लगा देते हो। जैसे ही आपने डॉलर्स लगाना शुरू किया, अल्टीमेटली द कंट्रोल्स गो अप एंड द रिस्क गो डाउन। लेकिन ये मैंने अभी फिर कहा, कंट्रोल्स यू डोंट गेट इट कंट्रोल फॉर फ्री। तो इसीलिए उसने कहा कि भाई आई वांट योर कमर्शियल एक्यूमेंट हियर, यानी यहाँ पर प्रोफेशनल मार्क्स जो मैं तुम्हें दूंगा वो आई वांट टू सी योर गुड बिजनेस सेंस, गुड कमर्शियल एक्यूमेंट, गुड बिजनेस एक्यूमेंट, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो व्हेन यू अप्लाई कंट्रोल, व्हेन यू राइट दिस आंसर, थिंक लाइक अ बिजनेस गाय, ठीक है ना। ऐसे सोचना है कि भाई आप उसमें अल्टीमेटली यू टॉकिंग अबाउट द सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करोगे। लेट्स लुक हियर, ऑलराइट। अब देखिए जरा मैं वो रिपोर्ट निकालता हूँ, और मैंने आपसे कहा कि ये कंपैरेटिवली इट्स वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। You must have this, here you go, exhibit 5, executive summary of the SMARTWEAR internal audit report on supply chain management, ठीक है। The report analyzes the effectiveness of the supply chain arrangement and whatever। असल मुझे देखना है इसकी बॉडी कि इसने क्या मुझे असल जो weaknesses बताई जिसपे खास बात की। The first issue is appraisal of existing suppliers performance। Most suppliers, keep this thing in mind that when you talk about the suppliers or supply chain, इसकी जब आप बात करते हो, you actually talking about the major cost center, see, especially with the business like you're doing the retail business or this fashion business, उसमें है क्या आपका? You look at the cost, which is your supplier, your major stakeholder, and then you see your customer, यही है ना? और इसी के बीच में you create value for your shareholder. Most suppliers have been working with the SMARTWEAR for more than 5 years, and there have been no reported instances when purchase orders have not been completed on time or in full. Okay, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ये भी ठीक नहीं है, especially in terms of employees and management and process and all that. जब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं हो, इसका मतलब हो सकता है कोई बहुत बड़ी शिकायत अंदर ही अंदर चल रही है. This has led to a rather complacent attitude from the buying department, who do not see the point in fixing something that is not broken. यानी they are waiting, they are actually waiting for the tipping point or the boiling point. ये कह रहे हैं भाई जब चल रहा है तो चल ही रहा है, यानी गाड़ी की मेंटेनेंस की कोई जरूरत ही नहीं है. As a result, if no quality problems arise, the buyers rarely contact the suppliers, which led to a culture of carelessness. सब ये सबसे बड़ी आपने ये weakness ढूंढ लेनी है, ठीक है, कि there is no as such, there is no proactive approach from their side. यानी ये जो इसने टर्म यूज की ना, the culture of carelessness, this is the risk you will be identified, this is actually the issue you will be identifying. कि भाई ये मैंने स्क्रीन तो शेयर की भी है इसमें की भी, यानी जो सबसे बड़ा इधर रिस्क आ रहा है जो हमें नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है कि they actually the culture, or I call it the attitude, the culture or the attitude thing, कि वो attitude जो है ना, attitude of management of not contacting, of carelessness. With this careless attitude and with this attitude, ultimately you're increasing the risk of the department, which is your major value chain activity. और उसकी वजह से क्या होगा, ultimately all the stakeholder risk going up. As a result, if no quality problem arises, the buyer really, okay, we discuss, supply contracts are awarded for a period of between 3 and 5 years. Big issue, the cost, जो मैं बार बार कह रहा हूँ. You don't look at the management, the directors, they don't look at the environment, they don't look at. अच्छा, मैं आपसे एक बात पहले भी कहता रहता हूँ कि आंसर्स की भी जिस तरह मेडिसिन की एक्सपायरी होती है, आंसर्स की भी एक्सपायरी होती है. When you look at the 2019 answer, it is expired, especially after COVID. Pre, during and post COVID वो expire हो चुके होते हैं. अब आप यहाँ पर एक बात कर सकते हो, when we used to talk that the environment is so dynamic, so uncertain, so unpredictable and all that, but after COVID you can say it is super unpredictable. Everything is now x, जैसे ना x और x square और x cube. अब तो आप यूं बात करें कि इतनी uncertainty और unpredictability दुनिया ने देख ली. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि we give them for 3 to 5 years contract. What about regular review? यानी इसका मतलब कोई ये देखने को तैयार ही नहीं है कि prices की fluctuation क्या हो रही है. Nobody cares. यही तो culture of carelessness. So this you can say that ultimately maybe you already have a contract with the supplier, but you don't review it, you don't review the contract, you don't review the pricing, you don't look at the market rates. ये सब कुछ आप देख ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, maybe you're not that competitive and ultimately your cost is going up. These are the impact.
not only you identify it, you give the impact as well. अच्छा, ये सब चीजें आप लोग F8 में कर चुके हैं, सारे यही problems वो बताते हैं. This means that prices rises annually by only a few percentage points, which is then built into a SMARTWEAR budgeting process. No effort is made by the buying department during a contract period to compare what. That's simple. यानी देखिए इसमें दो बातें हो गई. एक बात ये हो गई, when you don't look at the contract, when you don't review it, तो इसका मतलब एक तो आप you are not putting efforts for bargaining thing, ना bargaining के लिए कुछ करना चाह रहे हो, you not actually, you can use this term bargaining or you can use the term negotiation, कि आप you actually don't negotiate with your existing supplier. दूसरी बात ये है you don't do environmental study. तो आप दोनों तरफ से बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिल्कुल डम हो गए हो, सही है ना. एग्जिस्टिंग लोगों के साथ बात करने को तैयार नहीं हो टू रिड्यूस द प्राइस, और दूसरों के साथ जो है मार्केट भी देखने को तैयार नहीं हो. दैट्स थिंग. व्हाट शुड बी द कंट्रोल? यही सब चीजों को उल्टा कर दे तो कंट्रोल हो जाएगा कि रेगुलर रिव्यू, कि मार्केट को देखें, सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, रेगुलर रिव्यू होने चाहिए. ये नहीं कि 5 साल बाद ही कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शनल, देयर शुड बी एन एक्सेप्शनल टर्म दैट इन केस इफ the price may go up or down, fluctuation, some sort of percentage you can put in. So we'll have the option, maybe with a 2 months notice or maybe without any notice, कोई भी ऐसी चीज, यानी आप इस तरह का कोई winning arrangement from your side, यानी SMARTWEAR side पे आप रखेंगे, because you are the agent of your organization. तो ये सारी थोड़ी गुफ्तगू आप इसमें कर सकते हैं, and you can give some good controls. Not that difficult. The allegations that have been made about poor working condition in some supplier factories, full stop. ये अमूमन every time they ask, ये आजकल हर जगह चल रहा है. When it's about CA final BMS या ACCA का SBL का पेपर हो, कहीं भी हो, ये सवाल आ ही रहा है. और अब जरा गौर से सुन ले इस बात को. Let me see my own body language. मैं आपको ये quickly समझा दूं. देखिए, वो दिन पुराने हो गए जब only you have to take care of your organization, जिसमें आप खुद देखते थे कि either we doing any child labor practice or discrimination or gender issue and all that. अब मामला क्या हो गया? अब मामला ये हो गया कि वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी पूरी सोर्स को देखिए, यानी you look at your supplier, their insurance company and all that, the whole supply, front backward सबको आप देखें and make sure that they're doing sustainable work, ethical work, social work and all that. ठीक है ना? Although it's a very difficult thing, but you have to do it. ये बात पहले भी हुई है कि बांग्लादेश में फैक्ट्री गिरती है, बिल्डिंग गिरती है, और एहतजाज कहाँ होता है? You see on the London streets. सही है ना? इंग्लैंड में इधर मार्क्स एंड स्पेंसर एंड स्टोर्स के बाहर आप देखते हैं कि पब्लिक जो है वो नाराज होती है कि why you contact and why you support those people, those who are not doing good for the society, good for the environment and good for the public. कुछ भी, यहाँ तक कि अगर कहीं किसी जगह वो पॉलिटिक्स दिखाते हैं ना कि कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, बल्कि इसी केस में इस तरह दिया हुआ भी, ये सारे फैक्टर देखते हैं. मैं यहाँ पर एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं जो मैंने अभी रिसेंटली देखी. And I'm talking about HBR, Harvard Business Review, क्योंकि I'm a regular reader of HBR. उन्होंने इस दफा ये किया, ये मैंने बिल्कुल रिसेंट आपको बता रहा हूँ. वो हमेशा क्या करते हैं, हर साल they have this, they provide a list, they do the research and everything, and they provide a list of 100 top CEOs. सही है ना? दुनिया के टॉप CEOs के बारे में बताते हैं कि they are 100 top, and obviously they have their KPIs, performance indicator, financial, non-financial, all that. और उनकी परफॉर्मेंस को देखने का तो बताते हैं कि भाई this year number 1 CEO is this guy and he had this company and this is what XYZ, and he's on number 2 and 3rd and all that. This time they said that we're not gonna do this listing thing, हम ये रैंकिंग नहीं करेंगे. जवाब क्या उन्होंने लिखा? देखिए ये कितनी बड़ी सोशल और एथिकल इशू को उन्होंने हाईलाइट किया. उन्होंने कहा कि जी हम ये इसलिए नहीं करेंगे कि एवरी टाइम व्हेन वी डू इट, although it's a very motivating factor, ज़ाहिर है बहुत सारी कंपनी इसके लिए परफॉर्म करती है, सब कुछ है, क्योंकि CEOs को पता होता है कि maybe we'll on the top, maybe I'll be the second guy, third guy, fourth guy, whatever, and I'll be on HBR. तो एक ज़ाहिर है बड़ी मोटिवेशन होती है. ये ऐसे ही है जैसे एनुअल रिपोर्ट्स को रैंकिंग मिलती है by ICAP and by other professional bodies. तो ये बड़ी मोटिवेटिंग बात है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि this time on we're not going to do it, and we ended up, why? उसका रीजन उन्होंने ये दिया. बोला रीजन ये है कि whenever we do research and we provide the list of 100 CEOs and top CEOs, तो बोला हमेशा क्या होता है? they are always white people. ये उन्होंने लिखा है कि they are always white people because the whole industry, वो जैसे का S&P 500 हो गए, Dow Jones हो गए, जो भी ये बड़े इंडेक्स है और बड़ी कंपनी है सारी, बोला they are normally led by, यानी 99% बोला led by the white people. तो बोला हम जितनी भी मेहनत कर लें, we always see white guys at the top. सही है ना? although उन्होंने मेहनत की है सारी चीजें, वो एक अपनी एक अलग, that's a debate thing.
लेकिन इनका कहना ये है कि वी डोंट सी वुमेन देयर, वी डोंट सी अफ्रो अमेरिकन ब्लैक गाइस, हमें वो नजर नहीं आते, एशियन नजर नहीं आते, हमें सिर्फ व्हाइट हेड नजर आते हैं। तो बोला इस दफा से हमने उसको एंड कर दिया, क्योंकि इट इज द डीमोटिवेटिंग फैक्टर अदर गाइस। दिस थिंकिंग दैट वो फोन करते हैं, उनकी सोच है भाई एचबीआर ने इसको इस दफा से करते। तो बड़े हैरान कर बात थी, मैंने अभी लेटेस्ट एचबीआर में ये न्यूज पढ़ी। खैर, तो अब जब ये बात हो रही है ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली, इसमें ये क्या कर रहे हैं, सप्लायर्स को नहीं देख रहे। व्हाई दे डोंट लुक एट इट? बिकॉज समटाइम दे गेट चीपर कॉस्ट, समटाइम the guys they want to maintain good terms with their supplier, तो वो उनको easy जाने देते हैं। For example, the procurement director, he has good term with the supplier and he want to go easy, तो वो क्या करता है, ये सारी बातें आपने लिख ली, मैं आपको जरा क्विकली बता रहा हूँ सारी चीज आपने सब। वो क्या करते हैं, they give them easy terms, they don't write so many good things कि भाई ये हम strict terms लिख रहे हैं, no they don't do it। क्यों ना, फिर ये अच्छा ऊपर ही लिख दिया culture of carelessness, they don't look at the contract, once the contract is done, boom, जाने दो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, whatever they doing, कोई discrimination हो रही है, child labor हो रहा है, whatever they doing it, they don't care। क्यों, इन्होंने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को डिफिकल्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर स्मार्टवेयर के लिए सबसे बड़ा इशू है देयर ओन मिशन स्टेटमेंट, देयर ओन एथिकल गाइडलाइंस। इफ यू लुक एट पेज नंबर 3-4 जो इनिशियल इन्होंने दिया था, दिस इज आवर मिशन, दीज आवर विजन, दीज आवर वैल्यूज, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट देयर मिशन एंड वैल्यूज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ दे डोंट टेक केयर of their environment, of their suppliers contract, if the supplier are doing wrong, ultimately it is going to affect their own company reputation and their own stakeholders and their shareholder and their institutional investor, वो सब इन पे pressure डाल सकते हैं, because smartware, if they don't do it, they are actually going against their major thing, which is their mission and vision and all। ठीक है ना? अब मैं अगर इसको क्विकली देखूं भी तो ये लिखा ना कि भाई possibly unnoticed by the buying team, they don't care। seega they don't care, unnoticed by the buying team, and this is and if the suppliers had been more effectively monitored, then the buying department would have identified a clear contravention of the general terms and conditions contained within a smartware supply contract. These standard terms are a reflection of a smartware's own corporate social responsibility commitment. However, as the buying department operates as a cost center, we already discussed, the buyer's primary motivation is always to keep the cost down rather than motivate the ethic. That's simple। कैसे you scratch my back and I'll scratch yours, ये वाला चक्कर है। ठीक है ना? Immediate होना क्या चाहिए? What should be the control? What are the control guidelines? First of all, you see your mission statement, you have to make the contract or revise the contract with the existing guys। उनके साथ contract revise करने किसमें? कि whatever your ethical guidelines and mission statement say, you put all these terms there and you make it clear with them। क्या clear करोगे उनके साथ कि in case if we find any sort of breach of contract, will end up the contract and will step out। सही। एक और बात, दूसरी चीज जो आपने करनी है भाई, रेगुलर कंट्रोल्स उनके पास जो है, उनकी स्टेटमेंट्स उनसे लेनी है, उनसे उनकी रिपोर्ट्स लेनी है, सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर ऑडिट्स यू नीड टू परफॉर्म। मिसाल के तौर पे सोशल ऑडिट्स हैं, ये वो सारे, तो ये कुछ आपने कंट्रोल्स इस पे बताने। ठीक है ना? आई नो it is going to increase, देखो commercial acumen क्या है, it is going to increase your cost, but what about the risk, what about the benefit, you getting more benefit out of it। ठीक है ना? ऊपर वाले में भी हमने ये बात की, you getting more benefit out of it। तो ये commercial acumen को दिमाग में रखते हुए, then the very important thing, reporting। आजकल तो जो भी चीज हो रही है उसमें पहली बात तो रिपोर्टिंग की आ रही है ना, रेगुलर रिपोर्टिंग। whether I use go to webinar or you do purchasing, procurement, whatever you do, regular reporting is very important, और reporting weakness है। There is an exception that any serious breach of supplier, okay, I got it। अब जरा तवज्जो सुने, ये सवाल मैंने देखा था कई सालों पहले P7 में एडवांस ऑडिट में आया था, और मैं समझ गया उसको, देखिए मैंने पढ़ा ना इसको। Serious breach of supplier performance or unacceptable behavior would be reported to senior manager so that an appropriate and measured response could be made। However, the word serious, ये term मैं कहना चाह रहा हूँ, serious itself is a subjective term। For example, the organization says, the management says, will only report to the issues which are serious। What is serious? Maybe something which is serious for you, it's non-serious for me। है ना? ये होता है ना, क्लास में टीचर स्टूडेंट के बीच में भी तो यही बात होती है। पता ये चल रहा होता है कि जी वो स्टूडेंट टीचर कहती है that's a serious issue, you need to go out, और आप बोलते हो कि नहीं ये सीरियस नहीं है, इसमें क्या हो गया, इतनी सी बात पे। ये पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं इतनी सी बात पे
टीचर आप नाराज हो गए या हो गई, ये तो गलत बात है ना। तो सीरियस इटसेल्फ, अब ये आया था P7 में एडवांस ऑडिट में, किस तरह आया था कि उन्होंने लिखा था कि भाई वी हैड ओनली दिस नंबर ऑफ सीरियस एक्सीडेंट हैपेंड दिस ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस? सीरियस एक्सीडेंट क्या होता है? किसी के लिए थोड़ा सा गिरना भी, just to get a rash, और बोलते हैं oh this is very serious, it depends upon the attitude towards health and safety। कुछ के लिए हाथ कट जाए तब वो बोलते हैं ये बड़ा सीरियस हुआ, कुछ के लिए सर कट गया तो वो बोलते हैं सीरियस हुआ। what is serious in you, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस itself, ये सबसे बड़ा मसला है कि they don't report it regularly and they report it when they see it serious issue। Serious is a subjective term. What is serious for the institutional investor may be what that non-serious for the board of director, and maybe those who are reporting in the SMARTWEAR, which are procurement and purchasing guys। तो आप इसमें कंट्रोल क्या बताएंगे? सबसे अहम कंट्रोल आप इसमें देखो, रिपोर्टिंग जब रेगुलर नहीं होती, रिस्क क्या है? एक तो सीरियस वाली बात की, दूसरा when there is no regular reporting। When there is no regular reporting, it means there is no regular risk assessment। जो भी कोई इशू आएगा, that is not properly addressed, that is not timely address, ये वाला मसला, no timely address of any serious issue which they call it serious, वो चाहे कॉस्ट का इशू हो, वो ब्रीच ऑफ क्वालिटी का इशू हो, ब्रीच ऑफ एथिक्स का इशू, कोई भी रिपोर्टिंग तो सबसे अहम मसला है ना। रिपोर्टिंग तो चाहे वो अटेंडेंस का, मैं कह रहा हूँ ना, अटेंडेंस हो, फीस किसी बच्चे ने नहीं दी, रिपोर्टिंग इज एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये वाली सारी बात आपने पढ़नी, the impacts and all, and then you provide the controls। what should be the control? The first control is the culture of reporting, the system of reporting, एक चीज, and then regular reporting, regular intervals। it's not like whenever I want I can report, ठीक है। The third is the absolute criteria you all need to provide them, whether you need to hire people or what। मैं मान रहा हूँ कॉस्ट बढ़ेगी, look at the benefit, कॉस्ट बढ़ेगी, look at the benefit, बेनिफिट को सामने रखना है। CBA, मैं भी ये भी मानता हूँ कि दाढ़ी से बड़ी मूछें नहीं होनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लेकिन यहाँ पर आपने बात करनी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी सीरियस अबाउट सीरियस रिपोर्टिंग। यानी कि ये जो सब्जेक्टिविटी की टर्म है ना, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज टू बी, और आई कॉल इट एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट होना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा सीरियस एक्सीडेंट, तो सीरियस एक्सीडेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू define what is serious accident। in case if somebody goes on bed for 6 months, define if you go on bed for 6 months that is a serious illness for us, otherwise it's not serious। तो क्लियर हो गया ना कि भाई ये इंडिकेटर होगा, ये बेंचमार्क्स होंगे, ये PIs होंगे कि जिससे हम आपको पता चलेगा। यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, in case if the price goes up by 5% be serious, okay, that need to be mentioned कि भाई ये चीज सीरियस होगी। in case if there are these are the guidelines, if there is a breach of one of the guidelines, that would be serious, or not one, if any out of 5 conditions, if only 2 conditions are met, that could be serious for us। तो ये बात आपने कंट्रोल्स में लिखनी है कि हाँ भाई इस तरह इसको हम सीरियस कहते हैं। all right, let's move on to next requirement, which is very interesting, customer CRM और CDMA वाली requirement है। all right, requirement number 4, recently commissioned, the market research has conducted that SMARTWEAR appears to have no clear understanding of the profile of its customer mix। आप लोग सबको पता है, ये सब मार्केटिंग में आप पढ़ते हैं, and as a result operates quite unsophisticated and ineffective marketing campaigns। obviously recent financial result indicate okay an existing customer and company is losing its market share, whatever। the sales and marketing director has been considering the development and implementation of a sophisticated CDMS, customer data management system, incorporating a customer loyalty scheme and replace the existing very basic customer database। the market very basic customer database could be maybe customer name and their phone numbers and all that, that's it, that could be a customer database, and it depends कि आप customer के क्या database maintain करते हो। customer database ने कहा हमारा जो existing customer database है, this is going to be very basic, बहुत basic है, लेकिन हो सकता है सिर्फ customer के नाम, हो सकता है transaction की date हो, ये तो पता कर रहा है कि कितना आपको चाहिए। अच्छा then
it says okay, अच्छा जब when they are looking for this customer database management system, ये big database management system जो बनाएंगे, obviously it requires investment. इसके लिए investment की जरूरत होगी, एक बड़ी investment चाहिए होगी, और उसके लिए they have definitely done with this what do you call capital budgeting. कैपिटल बजटिंग की तरफ ये गए होंगे, जिसको आप लोग क्या कहते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह लें, कैपिटल बजटिंग कह लें, कोई भी चीज को कह लें, उसका भी उन्होंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है. अंडरटेकिंग a financial appraisal of this proposal to supplement the market research finding, and this indicates that it is financially viable in net present value terms. You have advised the sales and marketing team, you as a consultant, for the board to agree to the proposal, a clearly stated business case and more. Okay, सीधा सादा सा केस इन्होंने बनाया है सीडीए में. इतनी सीधी रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू राइट अ रिपोर्ट. ओके, आपने रिपोर्ट लिखनी है जिसमें सबसे पहली चीज, ओके, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ सीडीएमए इंक्लूडिंग द लॉयल्टी स्कीम फॉर स्मार्टवेयर. स्मार्टवेयर को क्या बेनिफिट है हैविंग दिस कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Yakinan, when you'll be putting your investment on customer database management system, because right now you have this basic thing, तो obviously ये वही वाली बात होगी ना, कंट्रोल वाली बात, कि पैसे लगेंगे, तो प्रोफेशनल मार्क्स किसके दे रहे हैं. Once again, I'll be providing you professional marks for commercial acumen skill by demonstrating awareness of business and wider external environment. ठीक है ना. Why we need this CDMA thing, CDMS हमें क्यों चाहिए, customer database management system. तो उसके लिए आपका गुड बिजनेस सेंस होना चाहिए. मे बी all the competitors or the environment, they don't have customer database management system. सही है ना, CRM वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, और आप अकेले ही जो है वो शुरू हो गए CDMS करना. तो वो यही कह रहा है कि I'll providing you the professional marks by showing, by if you show me commercial acumen of introducing this, कि इसके benefit. कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, सिर्फ benefits लिख देंगे, वो गए जीरो. benefits बताने to स्मार्टवेयर, सही है ना, लेकिन ऐसे बेनिफिट बना दे कि कंसिडरिंग योर एनवायरनमेंट एज वेल, कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है. देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, डोंट थिंक अबाउट 2019. कुछ बच्चे तो 2009 को सोच रहे होंगे, 2009 और मे बी 2000, इतनी पुरानी मेंटालिटी से भी चल रहे होंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ डेटा. भूल गए बिग डेटा को और ये सारी चीजों को. हमें बात करनी होगी आज की तारीख में. If it is 2021, आज की तारीख में, 2022 आज की तारीख में बात करेंगे. the same case, although I know the case is for 2019, लेकिन ये उस वक्त केस आया था. आज अगर इसी तरह कॉपी पेस्ट कर दे स्मार्टवेयर की जगह just change the name, तो आंसर would be totally different, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से जा रही है. अच्छा, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो तो इतनी आसान रिक्वायरमेंट है, वो भी हर दफा कॉपी पेस्ट को करता है. कैपिटल बजटिंग रिपोर्ट देता है आपको, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये एनपीवी, ये कंट्रीब्यूशन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट. स्केप्टिसिज्म बिल्कुल देखिए नीचे वही है. प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डिस्प्लेइंग स्केप्टिसिज्म स्किल, क्रिटिकल माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, डाउटफुल माइंड, उससे चलना है. और हमेशा एक ही जैसी चीजें होती हैं, सीधी सादी सी, कोई मुश्किल नहीं. लेट्स लुक हियर सीडीएमए, सीडीएमएस. ओके, देखिए सबसे पहला बेनिफिट जो सीडीएमएस का है टू स्मार्टवेयर. स्मार्टवेयर अगर मैं आपको बताऊं, स्मार्टवेयर इज नॉट ए लोकल कंपनी. ये एक लोकल इदारा नहीं है. इट हैज प्रेजेंस इन 1 2 3 डिफरेंट कंट्रीज, नोरिया ये वो. इट हैज कस्टमर बेस ऑल ओवर. इट हैज सप्लायर बेस इन अंडर डेवलप्ड नेशन एंड ऑल. सबसे पहली बात, the first good point is when you have your customer base and when you are in different locations, सही है ना, इसका मतलब आपके employees and everywhere, तो आपके पास you need to have your customer information system, जिसको आप CDMS कह रहे हैं. ये आपको क्या benefit करेगा कि you can access the information anywhere, कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो. when you'll have cloud application, right now what we doing it, ये आप बात करोगे कि when we'll have this cloud system, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि when you are in different locations, so your information should also be available anywhere. एक बात as a management, ठीक, ये तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा बड़ा अहम पॉइंट जो आप बात करोगे वो करोगे ऑफ शोरिंग की. ये वाली आज की बात, ये आज की लेटेस्ट बात, बैक ऑफिस वर्क की, ऑफ शोरिंग वर्क की. लेट मी गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. प्रैक्टिकल बात करें और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि एसबीएल का पेपर है. मैं आपको बताता हूँ वॉलमार्ट.
when I buy anything from Walmart online system या physical या कोई भी या Amazon या कोई, when I call them, और चाहे कोई एयरलाइन हो, वॉलमार्ट हो, कुछ भी हो, कॉल जब करते हैं तो all their call centers and their back office and everything where it is, it's in Indonesia, Philippines, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, सॉरी मालदीव्स, वियतनाम, इन जगहों पे अब क्या करें? उनके पास अगर इंफॉर्मेशन ही ना हो हमारे पास, अगर उनके पास कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, हाउ कैन दे? जैसे कल की बात है, कल मुझे एक जूता रिटर्न करना था, मैंने एक ऑर्डर किया और अगले ही लम्हे मुझे दूसरी जगह जूता वो सस्ता नजर आया, तो मैंने क्या किया, मैंने उस कंपनी को कॉल की, तो मैं फौरन ही समझ गया कि जिसने उठाया ना बल वो मैं समझ गया इट्स नॉट अमेरिकन, तो ये किसी और जगह से ऑर्डर। मैंने उससे कहा कि भाई दिस इज माय ऑर्डर नंबर, उसने कहा यस आई गॉट इट एंड योर नेम इज सुभान मिर्चावाला, ठीक है। मैंने कहा आई जस्ट वांट टू कैंसिल माय ऑर्डर। उसने मुझे क्या बोला इट्स टू फार फॉर मी, टू फार से मुराद ये है, उसने कहा ये मेरी अथॉरिटी से आगे, आई कैन नॉट कैंसिल। This is very shocking for me कि I have not received the tracking number yet, अभी जूता तुम्हारे प्रेमिसेस से निकला नहीं, कुछ भी नहीं, तो मेरा ऑर्डर क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? मेरा ऑर्डर कैंसिल करो राइट अवे एंड जस्ट रिफंड माय अमाउंट, ठीक है ना। तो वो नहीं कर पाई, विच इज अ डिससैटिस्फैक्शन थिंग फॉर मी, क्योंकि वो इदारा भी मुझे नया सा लगा था, कुछ कैलिफोर्निया का था। मैंने दूसरी दफा उसकी वेबसाइट पे गया और मैंने एक और नंबर उसका कॉर्पोरेट का निकाला और उस पर कॉल की। जब उस बंदे को मैंने कॉल की तो उसने राइट अवे मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, सारी चीजें। देखो बात क्या है, बात ये है कि आपके पास when you call the call center, when as a customer when you call the call center, you want to be completely satisfied because nowadays the waiting time and everything is going on बड़ा ह्यूज है। अगर मैंने वेट किया, सब कुछ किया, तो बहुत सारी चीजें तो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ कर देता है, वो फौरन हमें कहता है कि आई एम अ रोबोट। अच्छा ये वाला भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट। थर्ड, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट सिस्टम, रोबोट मैकेनिज्म, ये वाली बात आप लोग करेंगे। व्हेन आई कॉल बैंक ऑफ अमेरिका, बहुत सारे काम रोबोट ही मेरा कर देता है। वो मुझे पहले एप्पल आप कॉल करें, एप्पल खुद कहता है कि आई एम अ रोबोट एंड when you call Apple they say I am a robot and I understand complete sentences and I reply। आप अब उससे बात शुरू करें, yes I am looking for Apple iPhone 12, वो आपको बताएगा, where it is available वो आपको बताएगा। यानी आप सही तरह उससे इंग्लिश बोलते रहें और उसको समझ आती रहे। जब वो बहुत दफा थक जाएगा ना बिल्कुल कि आप नहीं बात कर पा रहे, या कोई चीज ऐसी जो आपके उसमें या very difficult and unusual question, then वो बोलेगा कि okay I am referring to a human, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे काम खुद कर लेता है। This is the benefit of CDMS when you have this customer database management system, सारा मौजूद होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी, they can access your history, सब कुछ उनको पता होता है। When I call Best Buy, उसको सब पता होता है कि मेरी सारी हिस्ट्री एवरीथिंग उसके पास होगी। That's the best point, ठीक है। तो then more customer satisfaction आपकी बढ़ेगी इसमें, ठीक है। आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो बाय हैविंग दिस बैक ऑफिस वर्क। एक और बड़ा अहम पॉइंट, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, जो मैंने कहा ये वैल्यू वाली बात आप करोगे, प्लस द मार्केट शेयर। यू कैन इंक्रीज योर मार्केट शेयर बाय हैविंग दिस डेटाबेस मैनेजमेंट थिंग। एक और इसमें बड़ा अहम पॉइंट इधर ही मैं इसको शेयर करूं, कैसे? जब आपके पास ये गुड CRM सिस्टम और गुड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे बेस्ट बाय को ये बात पता है कि आई एम एन एप्पल यूजर, आई हैव एवरीथिंग ऑफ एप्पल, चाहे मेरी एप्पल की ये वॉच हो, चाहे मेरे एयरपॉड्स हो, चाहे मेरा एप्पल की पेंसिल हो, चाहे मेरा ये आईपैड हो, चाहे जिस पे कैमरा चल रहा है मेरा मैकबुक हो, चाहे मेरा ये iPhone 11 हो, दे नो दैट आई एम नॉट एन एंड्रॉइड गाय, आई एम एन एप्पल गाय। और मैंने ये चीजें कब ली है ये भी उसको पता है। तो होता क्या है, मुझे बेस्ट बाय से कॉल आती है, हाँ ईमेल आ जाती है from their CDMS system, their robotic system, how about sir you increase and upgrade yourself। ये कैसे पता चला when they have my information कि मैंने ये iPad कब खरीदा था, तो उनको पता है नया मॉडल आ गया, let's do it। ये iPad के साथ कोई नई पेन आ गई for third fourth generation, how about you upgrade your iPad, how about you give a trade off thing कि तुम iPhone 11 Pro Max छोड़ो and let's go on iPhone 12। ये सारी बातें उसको तब पता चलती है, this way they can increase their shareholders wealth। ये वाली बात आप करेंगे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ के बढ़ा सकते हैं, वैल्यू बढ़ा सकते हैं by having this CDMS thing using commercial equipment। देखो commercial equipment यूज करो। अच्छा और एक और बड़ी अच्छी बात इसी CDMS से, आपको पता है कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि when you are in 1 2 3 countries, सही ना, डिफरेंट कंट्री, मैं आपको यूएस की मिसाल दूं, यूएस में कुछ डाटा ऐसा है, कुछ certain data where it is restricted by law, for example human resource data which you are not supposed to take it outside, यानी आप मुल्कों में दूसरे मुल्कों को नहीं दे सकते। अभी यहाँ तो HR की बात हो गई, कस्टमर की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कितनी दफा देखा कि कई बैंक्स कहते हैं कि, या पता चलता है, ऐसा विकीलीक्स आता है कि भाई फलानी बैंक का या बैंक ऑफ अमेरिका या वेल्स फार्गो या व्हाटएवर, दे आर इन सीरियस ब्रीच, सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच,
डेटा सिक्योरिटी ब्रीच, कस्टमर डाटा के भाई कस्टमर्स के इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स वो लीक हो चुके हैं, बी केयरफुल नाउ, यू नीड टू चेंज योर पासकोड और व्हाटएवर। फेसबुक कभी कभार करता है कि भाई वी लॉस्ट आवर डेटा, और ये क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म्स करते हैं, बिटकॉइन वगैरह। इतना अहम इशू है कि ये जो CDMS है ना, इट इज एक्चुअली अ गुड फॉर रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। इट ऑल्सो गिव यू एन एक्स्ट्रा वैल्यू कि आपके पास सारी चीजें बैकअप में मौजूद होती है। इन केस कोई ब्रीच हुआ भी तो यू हैव अ बैकअप प्लान अवेलेबल। एक और बड़ा इसके अंदर पॉइंट ये भी आता है, यानी आप अपने कस्टमर से कहते हो कि भाई you don't need to worry, we have all your information, it's safe। सही है ना, क्योंकि हम सारा काम क्लाउड बेस्ड कर रहे हैं। एक और, यानी सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं, सिक्योरिटी की बात नहीं। दूसरी एक और बड़ी बात ये है कि ये जो मैंने ऊपर लिखा ना 1 2 3, जब आपके पास, लेट मी सी माय सेल्फ, जब आप कई मुल्कों में डील कर रहे होते हो एंड मे बी सम सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, कस्टमर चाह नहीं रहा होता या कभी कभार लॉ मना करता है कि भाई if you working in this country you're not supposed to send information to XYZ other country or some specific countries कि उसमें आप हमारे एम्प्लॉइज की और इनकी इंफॉर्मेशन ना भेजें। अब यहाँ पर एक बड़ा संगीन मसला है, आपको CDMS से बेनिफिट होता है कि यू एक्चुअली नॉट टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन देयर, आपने क्लाउड पे रख दी और एक सर्टेन जो पूल ऑफ डाटा है उसमें से एक सर्टेन इंफॉर्मेशन यू अलाउ दैट पर्टिकुलर कंट्री और दैट पर्टिकुलर ऑफिस और ब्रांच और पीपल दोज हु कैन एक्सेस ओनली द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए सारे बेनिफिट्स स्मार्टवेयर को होंगे। क्यों? डिफरेंट कंट्रीज में different data customer base है इनकी, they actually growing and going in different market as well, they have their website and all that। अच्छा, different अपना market share भी से बढ़ा सकते हैं, they can give value to customer, they can understand customer needs। ये भी तो बात है ना, कितना अच्छा। देखो जो लॉयल्टी स्कीम प्रोग्राम है वो यही तो है कि they actually motivate with the help of all this thing, they can actually motivate customer to come in। सही ना, फिर से रिटेन कर सके कि उनकी हिस्ट्री उनको पूरी पता होगी कि इस बंदे ने क्या क्या मुझसे लिया, पहले क्या क्या चीजें रिटर्न कराई। कभी कभार ये भी तो पता चलता है कस्टमर ने बाय बहुत कुछ किया होता है, बट एट द सेम टाइम रिटर्न इज देयर, राइट, जस्ट नेक टू नेक। तो पता चला ये तो सिर्फ हमसे खरीदता है और वापस करा देता है चीजें, मे बी दे यूजिंग इट और व्हाट, क्या इनका चल रहा है कि भाई ये खरीदते हो, ये इस तरह इन्होंने हमारे कूपन्स यूज किए, इस तरह इन्होंने हमसे डिस्काउंट लिए, अल्टीमेटली पता चल रहा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाउ डू यू नो दैट? विद दिस CDMS। एक और बड़ी अहम बात इसके अंदर, बिग डेटा। देखो डेटा को हासिल करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यू हैव द डेटा, यू गेट अ डेटा फ्रॉम, यू बाय डेटा। आजकल तो डेटा बाय किया जाता है, सही ना, बहुत सारे इदारों से डेटा बाय कर लेते हो। डेटा बाय करना अलग चीज है, डेटा होना अलग चीज है, वो सब है। बट if you utilize this data, if you know process this information and then you get a meaningful picture, this CDMS will help you in doing that। आपको पता चल जाता है कस्टमर का बाइंग ट्रेंड कि यार ये कस्टमर कब खरीदता है, doing normally on the Black Friday या the beginning of the year, beginning of the month, किस टाइम इसकी क्या बाइंग होती है, कब टेक्नोलॉजिकल बाइंग करता है, कब फलानी चीजें, ये सारे आपको you actually come to know about the trend of the customer, each and individual customer you come to know about the behavioral patterns, वो सब आपको बता जाते हैं। and when you understand customer need, you better take care of the need, you better satisfy the need and you better make your good money। ऐसा ही होता है, नहीं होता? आपको पता होता है इसकी डेट ऑफ बर्थ कब है, क्या ये सिंगल है या मैरिड है, हाँ? तो कभी बर्थडे आई तो एक मैसेज चला गया, ओके हाउ अबाउट यू गेट 10% ऑफ ऑन दैट, हाउ अबाउट इफ इट इज अ सैलून, हाउ अबाउट फॉर यू एंड वाइफ जस्ट कम एंड गेट द सर्विसेज, ये चीजें होंगी। इसी तरह वेडिंग एनिवर्सरी आ गई तो उस पर कुछ दे दिया फलाना, यानी ये पता ही चला कि ये विद द हेल्प ऑफ दिस बिग डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दैट इंफॉर्मेशन इट इज प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली, सारी चीजें आपको मिलती है। देन now when you do this requirement, you do write the benefits, but link it up with the smartware current things कि smartware के साथ अभी क्या चल रहा है, सही है ना, मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये CDMS भी फ्री में नहीं आ जाएगा, सही है ना। ये जो CDMS है ये फ्री में नहीं आएगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कैपिटल, कॉल इट कैपिटल बजटिंग, सही है ना, कैपिटल बजटिंग आपको करके दे दी। कैपिटल बजटिंग को आपने यूजिंग योर स्केप्टिसिज्म, उसको इवैल्यूएट करना है यूजिंग योर स्केप्टिसिज्म, स्केप हर दफा एक जैसा देता है, कोई बड़ी बात, सही है ना। इसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वीक हो गया है अपना ये SPL का पेपर, एवरी टाइम यू सी द सेम थिंग, द कैश आउटफ्लो एंड ऑल दैट, और उसमें आपने वही 3-4 शॉर्ट से घिसे पिटे पॉइंट लिखने होते हैं। देखो क्या नजर आ रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये कैपिटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, और वो कह रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन CDMS टेक्नोलॉजीज आउटले कितना नजर आ रहा है, $38 मिलियन का। तो अब आप यहाँ पर एक
क्वेश्चन मार्क पे कर सकते हो कि भाई ये जो हमें आउटफ्लो नजर आया, मैंने कहा हमेशा इसी तरह वो देते आउटफ्लो नजर आया, और यू लुक एट द इंटरेस्ट रेट और यू लुक एट द बेनिफिट। तो आप जरा सोचें, आज आपने CDMS लगाया, राइट अवे यू गेट ऑल द प्रॉफिट। तो उन्होंने दिखा कि कंट्रीब्यूशन, ये दिखा हुआ इसमें भी ऐसा ही है, additional contribution is 22 million every year is constant using your skepticism. Who made it? ये कौन सा फाइनेंस डायरेक्टर है, कौन सा गाय जिसने ये चीज बनाई है कि भाई you right from the first day you will get this thing. इसको होना तो चाहिए था कि it should be like a take off of the plane, सही है ना, कि slowly ऊपर जाता है, it's get mature and then the decline phase over. पता ही चला तो दिखा रहा है 22 million right away आपको मिल जाएंगे. That's the skepticism point you use it, सही है. Second, what are the assumptions they have used? इतने नोरिया में और इधर उधर रिसेशन चल रहा है, सारी चीजें बोल रहे हैं हम CDMS लगाएंगे एंड बूम एडिशनल कंट्रीब्यूशन 22 मिलियन, हाउ कम? तो ये वाला अपने पॉइंट लिखना है कि व्हाट आर द असम्पशन, आर दे सो मच ऑप्टिमिस्ट और व्हाट? इसी तरह ये टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, यकीनन इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीजें दी होंगी, क्या उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है? और फिर ये ट्रेनिंग के साथ ही नहीं, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, इट्स नॉट लाइक अ बिल्डिंग और समथिंग, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल थिंग, इट रिक्वायर्स रेगुलर ट्रेनिंग एज वेल। क्या ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग और रेगुलर ट्रेनिंग पे बात हुई है नहीं हुई है, उसका कोई आउटफ्लो दिखाया नहीं दिखाया, उस पर कोई बात है नहीं है, ये स्केप्टिसिज्म वाला पॉइंट। देन वन बिग पॉइंट इज द मेंटेनेंस थिंग, द अपग्रेड प्रोग्राम, क्या उस पर कुछ हुआ? मैंने HR स्किल्स पे तो बात की, एक उस पर क्वेश्चन हुआ, एक है मेंटेनेंस प्रोग्राम, क्या कोई मेंटेनेंस प्रोग्राम है भी या नहीं? ये एक दफा चला तो ये सारी जिंदगी बस चलता रहेगा? नो, इट रिक्वायर्स डिफरेंट अपडेट्स, डिफरेंट एप्स, डिफरेंट कोलैबोरेशंस, क्या क्या नई चीजें आएंगी जिसके साथ एंगेज होंगे, उसके ऊपर भी ये सारे एडिशनल कंट्रीब्यूशन इतना चलता रहेगा, सही है। अच्छा, फिर उसने कहा कि इंटरेस्ट दिखा दिया, तो इंटरेस्ट तो वेटेड एवरेज उसमें शामिल होगा जो इसने ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया, लेकिन उसने इंटरेस्ट को अलग से भी दिखाया, देखिए, एंड द स्मार्टवेयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो फिर ये इंटरेस्ट पेबल और लोन ये कहां से आ गया जब आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दिया? तो इस पे भी आप एक क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसी तरह टैक्स रेट अगर आप देखें तो वो भी कांस्टेंट नजर आया है, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें भी कांस्टेंट नजर आई है, कॉस्ट भी कांस्टेंट नजर आई है। व्हाट अबाउट द नोरिया इकोनॉमी? व्हाट अबाउट एक पूरा आपको पीछे चार्ट बना के उसने दिया था, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिड दिस, सही है ना, इन आंसर मीटिंग 1, उसमें हमने बात की थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, इंटरेस्ट फैक्टर क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का नंबर क्या है। अब देखिए जब मामला इतने रिसेशन पे हो तो इन्फ्लेशन के नंबर पे भी तो नजर रखनी होगी। They say no, we'll have all the, you know, the outflow will remain constant. It means there will be no inflation. सही है ना, it means there will be no recovery, कोई चीज नहीं होगी। ये सारे पॉइंट्स आपने देखने, सब कुछ देख, लेकिन दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। आपसे कहूंगा ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये हर दफा ऐसी देता है, बेनिफिट्स दिखा के, ये दिखा के, अजम्पशंस दिखा के, ऑप्टिमिस्टिक होके थोड़ा इस चीजों को आपने पिकअप करना है, जो कि मुश्किल नहीं है, सेम लाइक F9 है, यू डू इट इन P4, सही है ना, कुछ नहीं करनी। और इसीलिए इस दफा इसने क्या कहा कि नो कमर्शियल एक्यूमेंट, आई विल गिव यू मार्क्स ऑन स्केप्टिसिज्म, कि आप जितने डाउटफुल होकर सोचेंगे, डोंट से दैट यू आर अ लायर और यू आर फ्रॉड और यू आर झूठा, और नो, that doesn't mean skepticism. Skepticism means you use your mind, you use your questioning mind, critical angle, उससे चलना है, and don't treat them as honest, don't treat them as dishonest, इस तरह नहीं चलना। आपने चलना है कि हाँ भाई, यानी we do some real talk, क्या ये हाल है, ये रिसेशन है, ये तुम्हारी कंपनी है, ये तुम्हारे कस्टमर्स है, ये CDMS है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक ही दिन में सब everything will remain, you know, go up, ऐसा नहीं हो सकता। There you go. And then the last requirement is, which is a good requirement, but straightforward requirement, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो क्या है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्योंकि उसने आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और आपके शेयर होल्डर्स और ये सब वैसे ही आपसे बहुत कंफ्यूज है। यू हैव ऑलरेडी सीन द बोर्ड मीटिंग। जरा देखें रिक्वायरमेंट नंबर 5। Severe criticism was forwarded to the chairman of SmartWear from an influential institutional shareholders about what it perceived as a short-sighted, narrow focus of the board on the low cost and low price model. Okay. However, the board considered this criticism to be unjustified. Okay, they can think whatever they want, since its focus has always been on the wider and longer term strategic interest of SmartWear that has enabled it to, okay, whatever. The board believes the most probable reason for the criticism is a lack of understanding by certain number.
ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि हर दफा ऐसा नहीं होता कि लोग जो है वो इतने ज्यादा स्मार्ट हो या वो फाइनेंस को समझते हो, या मे बी दे हैव डन देयर ACCA एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उससे क्या कहा कि इन्वेस्टर ऑफ द स्मार्टवेयर बिजनेस रैशनल एंड द कंपनीज इंटीग्रेटेड थिंकिंग to further improve the effectiveness of the communication with investor of the wider stakeholder community. See, अब दोनों बातें हो गई, not only the shareholder but the stakeholder community. This point to be noted. The board of Smartware decided to adopt its own version of integrated reporting. The board unanimously agreed. Okay, सारी बातें हो गई. You have been asked by the CFO to help him. Okay, आपने उसको help करना and persuade the board. यकीनन इस दफा जो मार्क्स मिलेंगे परसुएट करने के मिलेंगे. Persuade doesn't mean commercial acumen. Persuade doesn't mean analysis. It will require definitely your communication skills. सही ना, इसके प्रोफेशनल मार्क्स हैं, क्योंकि इस दफा you need to persuade them, you need to motivate them towards that thing, from traditional reporting to integrated reporting. Now, what is the requirement? Prepare one slide with appropriate notes. पहले भी बात हुई, जब आपको स्लाइड बनाने का बोले तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका, बिकॉज यू एक्चुअली टॉकिंग टू द सी पोजीशन. सी गाइस, बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ना नहीं चाहते. दे जस्ट लुक एट द स्लाइड्स जिसमें 1 2 3 4 आपने लिख दिया शॉर्ट बेनिफिट्स, और उसके बाद द एक्सप्लेनेशन यू डू इट इन द पैराग्राफ. ये भी याद रखें. मैं एक बताता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, समझे जरा मार्क्स पकड़ने. ये आपने बना दी स्लाइड, ठीक है. स्लाइड पे आपने बेनिफिट्स लिख दिया 1 2 3 4. डिटेल नहीं, सिर्फ बेनिफिट की हेडिंग, बेनिफिट की हेडिंग. जैसे एक बेनिफिट हो गया रिस्क मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, बस इतना. ओके, उसके बाद जो नोट्स, तो हर स्लाइड को पिक करें और उसका अलग पैराग्राफ, क्योंकि मे बी someone is interested in the board, just look at the third benefit और उसकी वो डिटेल को पढ़ना चाहते हैं. तो what he'll be doing, he'll look at the slide, the third benefit, और वो सीधा जाएगा थर्ड पैराग्राफ में और जाके लिखेगा. तो make it more professional presentation. सही है ना, जरा बात को समझिए. ये एक बहुत बड़ा मसला, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि when you ask people, especially when you're sitting in the board or when you're the CEO or CFO and you ask people, they lack in reporting. They don't know how to report to the top people. ये वही वाली बात है जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, वॉइस नोट्स. यार किसको वॉइस नोट करना है, किसको टेक्स्ट मैसेज करना है, व्हाट्सएप को किस तरह हैंडल कर रहे हो, कोई चीज का पता ही नहीं. बस लंबे लंबे 4 4 5 5 6 6 10 10 मिनट के वॉइस नोट, यू सेंडिंग इट टू योर डॉक्टर और योर लॉयर और योर प्रोफेशनल और योर टीचर्स. किनको भेज रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप वॉइस नोट, ईदर डोंट डू इट, एंड इफ यू डू इट, इट शुड बी वेरी वेरी क्विक, लाइक 30 सेकंड. और ये डिपेंड करता है कि कौन किसको भेज रहा है. तो बहुत सारे जगहों पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो जॉब कर रहे होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रिपोर्ट. इफ यू आर रिपोर्टिंग टू योर सुपरवाइजर, your operational management or your subordinate, that's a different kind of reporting. Go in detail. But if you reporting to the board, reporting बिल्कुल different होगी. इसकी एक और मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल दूं, जरा गौर से सुने. एडवर्टाइजमेंट अगर तुम मस्जिद, चर्च या किसी होटल, हॉस्पिटल, किसी के बाहर खड़े होगे, if you selling this brochure या flyer वो दे रहे हो, डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है, बिकॉज द पर्सन हु इज गेटिंग द फ्लायर, ही हैज टाइम, ही कैन गो होम, आराम से बैठ के कॉफी टेबल बैठ के पूरा फ्लायर पढ़ ले, मत डिटेल इंफॉर्मेशन. हाउ अबाउट द साइन बोर्ड, वो भी एडवर्टाइजमेंट है, बट द पर्सन इज ड्राइविंग अ कार, ही हैज ओनली 3 सेकंड. रिसर्च कहती है 3 सेकंड होते हैं उसके पास. 1 2 3, दैट्स इट. उसमें ये फ्लायर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसमें डाल. अब बताइए किस तरीके से होगी, किस तरीके से आपने बर्गर ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रिंक ड्रॉ करनी है, किस तरीके से फ्राइज बनाने हैं. तो एक नजर ये पड़ गई कि इट इज व्हाट अ बर्गर, और एक नजर पड़ गई लेट्स से $6. दैट्स इट. 1 2 3 यूं ड्राइव की, नजर पड़ी व्हाट अ बर्गर, फ्राइज, बर्गर, ड्रिंक एंड $6. बूम, खत्म. गाड़ी गुजर गई इतनी स्पीड से. 3 सेकंड 2 सेकंड, इससे थोड़ी है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि who is your target audience, what time they have, सही है ना, in which position they are in, सही है ना, what sort of content you providing, whatever, सही है ना. ये सारी चीजें, इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है आपने. और यही चीज वो अब आपसे पूछ रहा है. कैसे पूछ रहा है, राइट में. प्रिपेयर वन स्लाइड विद, इन दोनों रिक्वायरमेंट में फर्क है. मुझे कई बच्चों ने फीडबैक दिया कि सर ये 2 रिक्वायरमेंट हमारी समझ नहीं आई थी, यानी हम कंफ्यूज थे. कंफ्यूज नहीं होना
रिक्वायरमेंट बड़ा स्लाइड डिफरेंस है। ये ACCA के P1 और इस तरह के पेपर्स में भी ये इस तरह की वो करता था कि साइड बाय साइड देयर टू रिक्वायरमेंट्स लुक लाइक सेम बट देयर इज अ टेक्निकल थिंग। प्रिपेयर वन स्लाइड विद एप्रोप्रिएट नोट्स फॉर अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू बी गिवन बाय द CFO एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। यानी इसका मतलब CFO जो है he will be the guy, यानी आप CFO के लिए लिख रहे हैं एक्चुअली, and he will be the guy who will be presenting to the board of directors, and he's actually persuading to the board of directors which describe the benefits of integrated thinking within SMARTWEAR to all stakeholders। यानी पहली रिक्वायरमेंट में they're not talking about the shareholders, वो कह रहे हैं integrated thinking का, integrated reporting का, what are the benefits which our stakeholders will be availing if we do the integrated thing, if we avoid that traditional thinking। सही ना, उससे अगर हट के integrated thinking की तरफ आ गए तो हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, ये उसने परसुएट करना है बोर्ड को कि द बोर्ड से यस, बोर्ड एग्री करे। ठीक है, बेनिफिट्स बताने। कुछ बच्चे वही गलती करेंगे, ओनली जनरल बेनिफिट। बिल्कुल ठीक है, आपको जनरल बेनिफिट बनाने, लेकिन उन जनरल बेनिफिट को कहीं ना कहीं लिंकअप करना है विद स्मार्ट में। हर बेनिफिट लिंकअप नहीं हो रहा, एटलीस्ट राइट द नेम ऑफ स्मार्टवेयर इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ ब्रीफिंग पेपर फॉर द CFO to allow him to address the wider finance team। Now this time he's not going to ask to, he's not going to discuss it to the board or persuading to the board. This time he's going to talk to the finance team to explain how corporate reporting using the IR framework, integrated reporting framework, IR integrated reporting framework, provides more relevant information for SMARTWEAR's shareholder about the creation of sustainable long term। दो अलग रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है जिसमें CFO is actually persuading to board of directors about IR integrated reporting, integrated thinking कि अगर हम वो देंगे and how it's going to benefit to our stakeholders। उनमें डिफरेंस देखिए। Let me see myself, अपनी वीडियो पे चला जाए। दूसरा क्या है, नाउ ही इज गोइंग टू परसुएड टू हिज टीम, अपनी फाइनेंस टीम को वो कर रहा है कि भाई किस तरीके से जो हमारी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जो हम अपने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इंटीग्रेटेड थिंकिंग लेके आए। पहले तो हम सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल पे बात करते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बात करते हैं। इफ वी गो टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, हाउ इट्स गोना बेनिफिट टू आवर shareholders when they will be taking the decision for their long term decision, long term value creations। तो देखिए दोनों में फर्क है, बोर्ड एंड द टीम। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे बात करनी है स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। ओके, लेट्स लुक हियर। और प्रोफेशनल मार्क्स आपको क्या मिलेंगे? कितना अच्छा परसुएट कर पाते हो, यानी कितना जल्दी लोगों को बात मनवाने की सलाहियत है, कितना जल्दी यस करवा लेते हो, ये देखना है तुम्हें। ठीक है, डिपेंड्स प्रैक्टिकली हाउ परसुएसिव यू आर, कितना जल्दी पॉकेट मनी निकलवा लेते हो, किसी को एग्री कर लेते हो फॉर द डिनर एंड लंच एंड व्हाटएवर। सही है, तो देखना है। All right, let's see here। मसले को देखिए अब सबसे पहले आगे। सबसे पहले हम अगर पहली रिक्वायरमेंट पे अपनी जाएं, बेनिफिट्स के लिए आप एक स्लाइड बना लेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स? मैं अभी स्लाइड पे नहीं जा रहा, मैं तो डायरेक्ट बात, लेकिन मैंने आपको बता दिया हाउ टू मेक अ स्लाइड, जस्ट दिस ब्लॉक एंड 1 2 3 4। ओके, थिंक ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग, थिंक ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। देखिए एक हमारे पास जो रिपोर्ट होती थी ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग, यू हैव दिस कांसेप्ट which only talks about the financial side, which only talks about, जो ट्रेडिशनल थी वो किस पे बात करती थी? ओनली फाइनेंशियल साइड। अनलाइक इंटीग्रेटेड, जो ट्रेडिशनल थी वो हमेशा किस पे बात करती थी? पास्ट पे। अनलाइक इंटीग्रेटेड थिंकिंग which talks about future as well, जो ट्रेडिशनल थी वो सिर्फ फाइनेंशियल साइड पे यानी डॉलर्स पे बात करती थी, वो स्ट्रेटेजी पे, एनवायरनमेंट पे उस पे बात नहीं करती थी, ओनली इंटरनल चलती थी। ये आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंटल बात भी करती है। ट्रेडिशनल जो थी वो आपकी बड़ी हिस्टोरिकल और शॉर्ट टर्म पे बात करती थी, ये शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म पे बात करती है। ठीक है, ट्रेडिशनल जो आपकी रिपोर्टिंग है दैट इज वेरी टेक्निकल एंड इट रिक्वायर्स टेक्निकल पीपल टू अंडरस्टैंड। सही है ना, ये आम आदमी समझ भी नहीं सकता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ चेयरमैन रिव्यू या CEO रिपोर्ट जो है वो फिर एक आम आदमी समझ लेता है, बिकॉज दे राइट इन इंग्लिश नरेटिव फॉर्म एंड ऑल दैट इन द एनुअल रिपोर्ट और द इंटीग्रेटेड थिंकिंग। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द नोट्स टू द अकाउंट्स एंड इफ यू टॉक अबाउट द IFRS एंड IAS एंड US GAAP और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो, दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल सेट ऑफ स्किल बाय शेयर होल्डर। और ये जरूरी नहीं कि हर शेयर होल्डर इतना काबिल हो जो उस चीज को समझ सके। दैट्स व्हाई वी हैव द अदर रिपोर्टिंग एज वेल। ठीक है, अब जरा सोचें, आपने परसुएट करना है बोर्ड को, व्हाट आर द बेनिफिट्स राइट नाउ स्मार्टवेयर, वेयर इज स्मार्टवेयर राइट नाउ? सबसे बड़ा मसला तो स्मार्टवेयर का यही है कि देयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ। जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो खुश नहीं है और उस पे बोर्ड को ये लगता है कि मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड इट। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग व्हाट वी कैन डू, we can help them in understanding by providing future outlook। भाई वो क्यों, why they are scared, वो क्यों कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि I don't know what will happen with this business model, business case and all that। With integrated reporting you can give them a good future outlook, वो उनको बताएंगे। Plus second big benefit is about you will be telling them about your strategy and you telling them about the strategic fit, that how are as a smartware model, business model which is a cost leadership model, उन्होंने क्या कहा था कि हमें ये business model नहीं समझ आ रहा, आप ये बताओगे कि how this model and this business strategy and this cost leadership strategy due to this Noria thing or due to economic recession, how it is a perfect strategic fit or how it's a good strategic fit for our overall stakeholders। तो ये वाली बात भी you can provide an integrated reporting and maybe this can satisfy। ये आपने बताना है कि पहले शुरू में general benefit लिखना है and how this gonna help in explaining it to the institutional investor, complex institutional investor है, उनको ये कैसे help करेगा। अच्छा then you can also talk about when we say traditional thinking जिसमें हम सिर्फ डॉलर्स की बात करते थे, यहाँ पर you can talk about the non-financial side, which is let's say you can talk about the CDMS thing, what sort of improvement you'll be bringing for the customer which can increase the value of the overall company and definitely it will be providing benefit to the overall stakeholders, जिसमें you can address to the employees as well। क्या ख्याल है? क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए भी तो ये इट विल बी अ बिग चेंज, ये चेंज ही है ना, क्या ख्याल है? ये एम्प्लॉय के लिए भी तो एक चेंज ही आने वाला है कि उनको भी ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी होंगी दिस CDMS। तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग टू योर स्टेक होल्डर्स स्पेशली योर एम्प्लॉइज एंड हाउ इट्स गोना बेनिफिट टू द अल्टीमेट वैल्यू, it's gonna benefit to the customer, it will be affecting favorably to the overall organization and all that। तो इसका जिक्र भी आप कर सकते हैं CDMS का। अच्छा then good point, let's look here, risk management। In integrated reporting we can talk about different risk, हम कई किस्म के risk पे बात कर सकते हैं and plus what organization is doing for those risk management strategy। For example the recession thing, कि भाई इस वक्त recession से या for example जो इन्होंने बात की है कि right now we are in 1, 2, 3 country and how it's gonna benefit us if we minus these 2 countries। भी लिख सकते हैं and after eliminating or after stepping out from those countries how it is going to affect our overall value, financial and non-financial value। फिर बहुत से लोगों को इशू था ethical मामलात पे कि भाई if you are going out it's going to affect the unemployment and all that, you can address that issue as well। इस इशू को भी एड्रेस किया जा सकता है as you are coming out from different countries। सही है ना, दूसरे ममालिक से आप आ रहे हो, माइनस हो रहे हो और इस मुल्क में you will be adding more investment and XYZ, तो इसको भी you can give a better addressing thing। अच्छा one more thing, ट्रेडिशनल जो होती थी मैंने अभी आपसे कहा कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती थी और ज्यादा फोकस होती थी क्या, शेयर होल्डर फोकस। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, इससे you can have a good stakeholder management, you'll be having a good stakeholder management thing। क्यों? क्योंकि अब इससे आप बहुत सारे stakeholders की यानी you actually explaining to the wider stakeholder need, ये जो मैंने टर्म यूज की ना, wider stakeholders needs can be addressed with the help of integrated reporting। Traditional reporting actually address only the shareholder need and the financial need and all that, only historical data। लेकिन ये क्या करता है, ये शॉर्ट के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करेगा और फ्यूचर और आपके पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के साथ फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे बात करेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके ऊपर भी बात करेगा, फ्यूचर स्ट्रेटजी पे बात करेगा, यानी देयर आर सो मेनी रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल थिंग एंड गुड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, उस चीज को भी एड्रेस करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट। अच्छा और सुनिए
इसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। COVID-19 in integrated reporting. How can you handle COVID-19 thing? ये बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा मसला। आजकल आप जितने इदारों से बात करें ना, when you talk about the shareholders या institutional investors, or you talk about the bankers, let's say talk about the employees, labor union, whatever, एक ही सवाल होता है, what is your stand in COVID-19? How do you see your business after COVID-19? How can you take care of your business? How can you manage this ship during COVID-19, or maybe not in COVID-19, after COVID-19, or you're done with the first phase of COVID-19? What about the second phase, or in case you have phase or fourth phase, फिर क्या करोगे आप? ये सारे questions को भी you can easily address in integrated reporting. Otherwise, normally the stakeholder views, आप ये वाली बात कर सकते हैं, especially in COVID-19. The stakeholders, especially the institutional investor, they want to take out their investment. The bankers, they don't want to provide you further loan, or maybe they're asking you the loan, or maybe they don't want to change the terms. Employees, maybe new fresh blood is not coming in. Yeah, your existing employees, they want to say goodbye because they feel the organization is going down. और यहाँ पर तो वैसे ही recession और ये वाली बातें हो रही है. Obviously, March 2019 का है तो they didn't talk about COVID-19, लेकिन अब ये बात बड़ी अहम हो सकती है in integrated reporting, and this could be a very big part of integrated reporting. So a big part of integrated reporting, COVID-19, और especially उसमें आप बात करोगे the environmental factors, your own strength, उस पे आप बात करोगे, and what is your future plans, उसको कैसे, and what's your backup and risk management strategy, and how your stakeholders are help, and what sort of growth or survival, बल्कि मैं इसके लिए एक term use करूँगा, your survival strategies, वो आपके पास क्या है, survival and sustainable strategies, you can talk about that in integrated reporting. फिर इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज है, एक बड़ा अच्छा बेनिफिट ये भी है कि रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है. द मोर ट्रांसपेरेंट यू आर, द मोर गुड रिपोर्टर यू आर. Not only you talk about finance and other factors as well, how good explanation you have, तो ये चीज ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेट रेपुटेशन को बढ़ाती है और उसकी शेयर प्राइस है उसको अट्रैक्ट करती है. फिर एक और बात, इट अट्रैक्ट्स, जो मैंने पीछे बात की, गुड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर एक टर्म आप लिख सकते हो, इट एबल टू अट्रैक्ट गुड स्टेक होल्डर्स because you are more transparent and open. फिर एक और बात ये कि it is actually going towards good, I say, corporate governance practice. If you see the corporate governance practice, if you look at my read my lectures on corporate governance, तो मैंने कई दफा ये बात की कि भाई corporate governance तो बात ही किस पे करता है? Talk about accountability, it talk about responsibility, talks about transparency. So the more you write this about integrated reporting, if you go on integrated thinking and reporting and all that, it means that the board of directors is actually discharging from their agency duty, from their stewardship duty. As an steward, as an agent, as a steward, they can discharge by providing integrated reporting. As the head of the SMARTWEAR, they can discharge from their accountability and responsibility, or I say the corporate governance duties. ये कुछ अच्छा points हो सकते हैं. And you can write more points. Integrated तो एक पूरा दरिया है. Good point यहाँ पर क्या है? देखो, professional marks आपको किस चीज के मिलेंगे? They'll talk about how good you write, how persuasive you are, how strong your arguments are, how, देखो, what did they ask? They ask about benefits. How clear you are in terms of how clear you are plus how clear you explain, how motivating you are, मैं कहूँगा, how clear you are plus how clear you explain, your explanation in terms of explaining the benefits. क्योंकि आप सामने वाले को अपनी चीज, you are actually a seller, मैं आपको सीधे लफ्ज़ में बोलूँ इसमें, you are a seller. You are a seller in this requirement. You're a seller and you're selling your integrated reporting, or you're selling this particular report process, this particular report thing to the board of directors. They will accept it if you are good
if your pitch is good, अब मैं एक और term use करूँ, if you have a selling pitch, सेम आपने जब आप बात करोगे ये इसमें integrated reporting, if you're bringing in corporate reporting and you're talking to your team, finance team, corporate reporting पे बात करोगे तो आपने उसमें भी यही बात करनी कि see why we need information, why we need, okay, why shareholders need information. चलो आप बताओ, share सोचो थोड़ा, pause my video and just think about it. Why shareholders need information? What, देखो shareholder है, investor नहीं, investor अलग होता है. Investor का role ये होता है कि he's not a shareholder right now, he's a prospective guy. सही ना, he may be a shareholder. लेकिन जब आप shareholder की बात करते हो, it means he currently have the shares. Shareholder के decision क्या होते हैं? Shareholder के decision क्या होते हैं? Shareholder के decision ये होते हैं, maybe to sell the shares, not sell the product, sell the shares, maybe buy more shares, maybe exercise the right option. कोई right option आया तो उसको exercise करना है नहीं करना, obviously ये shareholder का decision है. Shareholder का एक decision होता है about some resolutions, कि उसमें क्या voting करनी है, about the board of directors, किस chairman को रखना है नहीं रखना, और just kick him out, ठीक है ना, chairman को रखना है नहीं रखना, about all these things. ये सब shareholder के decision होते हैं कि यार क्या मुझे इस कंपनी के साथ चलना है as a shareholder, क्या मुझे further investment करनी है, jumping more, do I need to exercise the right option, do I need to sell my shares or what. तो ये बात आपने करनी है कि shareholders are looking at the information and they want the information. Why do they want the information? Because of all these things. And obviously information, good information should be, you know, relevant for users decision, especially when we talk about the shareholders decision. It should be reliable. Basically that require your own good practices and honesty and all that. Should be obviously timely, reliable, quality. It should be, I say, understandable. पुरानी ट्रेडिशनल जो थी वो क्या थी, वो थी टेक्निकल. अब देखो, अब आप अपनी टीम को समझा रहे हो, एंड दिस टाइम डोंट फोकस ऑन स्टेक होल्डर्स, फोकस ऑन शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट होगा इससे, तो अब आपने बताना है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग असल में जो हमारी ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग थी वो सिर्फ वन टाइप ऑफ कैपिटल में बात करती थी, विच वाज फाइनेंशियल कैपिटल. ये अब आप लोग को पूरे रखने पड़ेंगे. When you are done with your preparation, you're doing this examination practice, आपको पता है कि integrated reporting में you have different kind of capital as well. For example, your HR capital, very important. You not only talk about the financial capital, you do talk about finance, but you at the same time you talk about HR capital. You talk about innovation capital, या जिसको आप कहते हो knowledge innovation management या knowledge management. You talk about green capital, planet capital, natural. You talk about ethical and social capital. You talk about your stakeholder या supply chain capital, कुछ इस तरह का उसका नाम है ना, supply chain relationship capital or something like that. सही ना, यानी आप सिर्फ एक कैपिटल पे बात नहीं करते हो. ये तो this was the traditional thing when you have, and just imagine when you only have, when you as a decision maker, when you only look at the financial side of something and you are blank with other side about the HR, about the intellectual capital and all that, obviously your decision would be limited or your capacity would be limited. Somebody is actually restricting you. Like with this integrated thinking, it's expanding, it's giving you more vision about that. For example, अगर हम SMARTWEAR की बात करें, we'll talk about HR capital. We'll talk about financial capital, that how our finance is going to be utilized. यहाँ पर आप बात कर सकते हो, where we are going to invest, CDMS. हम एक नए CDMS में invest करें, इसका मतलब we'll be putting more funds in our this thing and we'll be getting the positive NPV and all that. And not only we'll talk about the financial capital in CDMS thing, we'll also talk about our innovation, our knowledge capital. कि भाई इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इस CDMS से ये हमारे सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल का पार्ट नहीं है. आप बताओगे this way we will be utilizing our financial capital and we'll getting this NPV. अब ये मत चले जाना इसमें कि उसकी assumption ये थी और ये हो ना, वो रिक्वायरमेंट हो गई. अब दूसरा, इसी CDMS से हमारे HR को या हमारे ओवरऑल कस्टमर्स को in our supply chain, how they gonna take benefit.
with this CDMS thing. अगर ये ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग होती तो you only talk about the financial capital that will be investing this amount in a technological app or system something. But here with integrated reporting, you not only talk about this financial side का बताओगे, साथ साथ इनको customer और supply chain का बताओगे कि how it will increasing our value by putting our this capital, HR capital or ये वाला capital और फलाना ये चीज. Then you can also talk about the closure or you coming out from some countries. उससे हमारा किस तरह financial capital release होगा, this you'll explaining them, and at the same time इससे हमारी overall supply chain वो चीजें हमारी कैसे improve होगी, suppliers and all that. फिर इसके अंदर आप बात कर सकते हो आपके अपने जो ये जो child labor वाले issue है in social capital आप बता सकते हो कि how our mission and our ethical guidelines talk about avoiding the child labor and all that, and we have some good contracts with our source, with our suppliers and with our extraction guys and all that. उनके बारे में although कंपनी में वीकनेस चल रही है बट आपने ये बात नहीं करनी, नहीं बताने कि किस तरीके से हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और हमारे सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे हाउ वी यूटिलाइजिंग दिस थिंग. ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट उस पर बात करनी, एथिकल इश्यूज उस पर बात करनी, ऑल्दो हर चीज हो सकता है आपके साथ लिंकअप ना हो रही, ठीक है ना, लेकिन जो मेजर एरियाज लिंकअप हो रहे हैं यू कैन टॉक अबाउट दैट. सही है ना, यहाँ पर भी आपने वही बात करनी है कि योर ऑब्वियसली योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स what they want right now, refer it to the board meeting. In the board meeting the NED said this thing, the finance director said this, and obviously they are not satisfied with our reporting. With the help of this modern reporting and this smart reporting and this integrated reporting, we can satisfy them by providing them this. एक आधा point दोनों रिक्वायरमेंट में से दो रिक्वायरमेंट जो इसमें एक आधा पॉइंट ऐसा होगा स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाला जो मे बी यू विल बी रिपीटिंग इट. क्यों रिपीटेशन हो जाएगा? क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट में टू टॉक अबाउट स्टेक होल्डर एंड वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर इज योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हिच हैव द ग्रीवेंस, यही बात बोर्ड में थी. तो दूसरी रिक्वायरमेंट तो है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर से बाद योर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनके बारे में तो मतलब ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है. द सेकंड रिक्वायरमेंट यू कैन से once our institutional investors are satisfied by looking at our human resource capital, by looking at finance capital and the HR capital and the innovation capital, the social capital, the natural capital, they will have a good clear picture, and with this they'll be able to invest more, they'll be satisfied more, they'll have, let's say, the good words which can ultimately increase the confidence of the market, and ultimately the confidence of the market will affect the share price. इन सब चीजों को यानी अल्टीमेटली जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो हमारी वैल्यू है, इट विल गो अप विद दिस. यानी आपको देखो लिंक बनाना है हाउ द ट्रेडिशनल थिंग्स गोइंग आउट, द न्यू मॉडर्न रिपोर्टिंग एंड हाउ इट्स गोना बेनिफिट द शेयर होल्डर with by providing the benefiting to the shareholder, how it will increase the overall value to the other shareholder and to the whole company. ये वाला इनको इस तरह इन्फ्लुएंस करना है. वंस अगेन इसके भी रिक्वायरमेंट में आपके जो प्रोफेशनल मार्क्स है वो क्या है, योर persuasive, your communication skill. और देखो ये वाली बात लिखी भी है, professional marks skill are available for demonstrating appropriate communication skill to the different audiences, and there are two audiences. One is the board and second is your own finance team. One talk about all the stakeholders if we introduce this integrated reporting, and in second you actually talking about to integrated reporting framework provides more relevant information for SMARTWEAR shareholders about the creation. यानी ये भी असल में बेनिफिट ही बता रहा है, लेकिन बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. उनके लिए कितनी रेलेवेंट होगी इंफॉर्मेशन? उनके लिए all these capitals are relevant. All these capitals are relevant. Not only the dollar capital, the non-dollar capital as well, and how it is affecting, because they are investors. Their investment capital, their funds is at stake. So they want to see how you guys are doing, how you guys are utilizing this fund, and in collaboration with this fund collaboration with how it is integrated with the other capitals, the other areas of the organization. Kis tarah, or ultimately how you creating the value by utilizing these different capitals. Okay, ye baat hai. If you have anything, any good point or about the technical marks or the professional marks or something,
I'm always open for the feedback. Let me know. मुझे बताएं. You have my number and everything. सही है ना? और लेकिन before you look at this video, मैंने शुरू में भी कहा, we have 2 other videos. One is for the question, second is for the answer, and third one, this is last one, is also for the answer. वो सब आपके यहाँ मौजूद है. और लेकिन मेरी advice आपको यही है कि first you do it yourself. Don't even look at the question. Question से मराद question वाली video वो भी ना देखें. अपना खुद question पहले पढ़ें और उसको solve करें everything. और if you want to see in, you know, what do you call the in installments, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि first you read the question yourself, your case study and your plan and everything, and then look at my video number 1. Once you do the requirement first and second, watch out the second one, and then after this the third. ठीक है? तो बहुत सारा ख्याल रखें. रात हो गई. Good night from here. ठीक है? तो अच्छा लाइट ऑन थी वरना अंधेरे में आ जाते. चले. Goodbye.